So hi Rajesh, how are you? I'm good. How are you? All good, all good. So how has been your journey? कैसा लग रहा है? It's a cultural diverse change. It's all, I think it's black and white kind of a change. So how is your experience with it? Well, so my experience is kind of good if you ask me now, but first 2 weeks is kind of hard for me. So I landed in April, and it was continuously raining for like 2 weeks, and I was kind of Okay. missing home, and a lot of homesickness is there for the first 2 weeks. But once you started going to the college, you will make a lot of friends, and the best part I think in Canada is that you will get a lot of diverse people. So you will get a people from like from Nigeria, from Philippines, from Korea, South Korea, and all that. So yeah, it is interesting, and each day you kind of learn different. So And can I call it a cross-cultural training for you at this point of time? yeah, it is. I get to know a lot of different culture, honestly, and a lot of different accent. To be very honest with you, so you get to learn a lot of things. You get to learn a lot of technology, a lot of different rules as well. Some you like, some you don't like, but yeah, it's an interesting journey so far. It's been like a month, and I am kind of loving it each day now. So थोड़ा सा राजेश अपनी प्रोफाइल के बारे में बताओगे what you were doing in India. उसके बाद किस तरीके से you thought that you wanted to take a change as you took a decision all the way to go to Canada and pursue your study at the age of I believe 33 34. So Yeah, no, all no, the not way 33. थोड़ा सा वो अपना प्रोफाइल या थोड़ा सा अपना एक डिटेल कैसे एक्सप्लेन करोगे कैसे तुम्हारे दिमाग में आया that okay let's go to Canada and start the education further. Okay, so first of all, I'm not 33, honestly, but yeah, I am close to 31, 32 now. But so it is always my dream to study outside India. I was not having financially that stable during my like 25, 26 of age, but that is back in my mind to study abroad. So I kind of trying. Before COVID as well, trying to move outside India, but unfortunately that COVID kind of took like 1.5 years for us. And I the best part I think is that the colleges here in Canada and the rest of the other Western countries, they kind of give you an opportunity. So if I talk about my experience, I have a couple of years of experience working in IT. So professionally, I am an immature student, that I can tell. And once you get here, you will not feel like you are a elder person, or you are kind of competing with a guy who is like 23 or 24 years old. So they treat everyone here as a student, whether you are like Okay. 30-year-old or you are So I think experienced. that is very comfortable Yeah, that is very comfortable, and you because will otherwise you don't generally get along with with people those who are having different age group than yours. But I exactly. think if the teachers, the professors, they are taking you along, then it becomes easy journey for a student to get mingled with them. And so it's not, I thought it was only me who is like 30-year-old studying in colleges, but a lot of people with the same age and with the same background, they kind of Okay. worked in their own respective countries and came here for the higher studies. my Okay. my best part is that I am kind of sticking to my career domain, what I'm doing in India. So I'm kind of sticking in that particular domain as well. So I kind of liking it, because I have I can relate that memory with my job as well, what I'm studying right now. So it's very helpful, and you will get a different age groups when it comes to studies in countries like Canada and US. So yeah, it is comfortable, honestly. I don't feel like I'm an elder person, or I'm sitting with a 24-year guy, because everybody's same, and the professor are kind of very nice to get you comfortable. And the professor are kind of mature people who has experience like 30 years old in their own domain. So yeah, that really helps you to get calm That's down, settle easily. good. So कितना जरूरी है राजेश, let's suppose if a student from India or from any XYZ country who's applying to further education, एक दो मिथ होते हैं लोगों के मन में बड़े कॉमन, जो वी ऑलरेडी ऑलवेज वी कम अक्रॉस विद दीस थिंग्स कि हमने पढ़ाई छोड़े हुए हमें 12 साल हो गए हैं, सो मुझे नहीं लगता कि अब हम आगे पढ़ पाएंगे या वी कुड एवर गेट अ स्पेस जहाँ पे मुझे लगता है कि हम पढ़ाई दोबारा कर सकते हैं ना. वी आर गुड टू गो फॉर वर्किंग्स बट व्हेन इट कम्स ऑन एजुकेशन आई डोंट थिंक दैट वी विल बी पॉसिबली डूइंग इट बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग गैप.
So क्या ऐसा कोई challenge actual में आप face कर रहे हो अभी या आपने किया when you have joined the college? Honestly, मैंने Canada में आके there is no such thing which I felt. I think the major thing which which आप decision नहीं ले पाते, that is only I think you are afraid of resigning from your job. The job is very important to you. In India, I think the major thing which I kind of struggling is to take a decision. I don't want to leave my job because I'm working really good there. I have a good stable job. I'm getting like salary every last day of the month. So I think that is the only part where people kind of feel scared or feel a little they don't want to get out of that comfort zone, and I think that is where I kind of take the decision कि हाँ नहीं मेरे को जाना है and I want to go. मैंने वो decision लिया and I kind of think that is the best decision I kind of took in my whole career as of now, because not only I'm kind of pursuing the higher studies, but I think the opportunities which I'm getting after completing this studies is way higher than what I'm going to get in next 10 years in back in India. इंडिया में आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग, यहाँ आके यू विल नॉट फाइंड इट रियली वियर्ड, बिकॉज you will find lot of people with your age working in a different departments at a different level. So यहाँ पर 30 साल का भी मैनेजर आपको मिलेगा एंड आपको 40 साल का भी मैनेजर मिलेगा. People get easily promoted, they don't like vary themselves as per their experience. आपके पास skills हैं, you can get a good job here in So Canada. काफी time बाद you might be speaking the complete sentences in Hindi, as you must not be in a habit of speaking in Hindi हाँ, there, so right? Okay, so मतलब ये इतना problem नहीं होता है. So जब आप राजेश, when you landed there in Canada, एक दूसरा जो question बच्चों को सबसे ज्यादा होता है कि मैम we don't know anyone there, right? So how about the accommodation part? How about the part-time jobs जो कि बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है कि कनाडा में पॉपुलर है और स्टूडेंट भी बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं ऑन द पार्ट-टाइम जॉब्स फॉर देयर एक्सपेंसेस, फॉर देयर लाइवलीहुड. सो कितना डिफिकल्ट होता है टू अरेंज द एकोमोडेशन एंड द पार्ट-टाइम जॉब्स फॉर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट? So accommodation का मैं आपको I can tell you from my experience, because I can tell you for your audience, your students, new students, कि यार I don't have any relatives in Canada. I am basically completely new person in this country. कोई relative नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है. So accommodation is quite easy. एक बार आप प्रोसेस में चले जाओगे, you will get a good accommodation. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि you will not find the property भरती नहीं है यहाँ पे. There are ample properties. It's just depend on your preference कि आपको sharing में रहना है, आपको private room में रहना है. You will get easily. There are different groups, there are different websites. They are all reliable. You can search the property on their own here. जब आप लैंड करोगे यू कैन सर्च फॉर अ वीक. आप वीक के लिए कोई एयरबीएनबी होटल ले लो, उसके बाद यू कैन सर्च इट. लॉट ऑफ पीपल विल हेल्प यू हेयर. यहाँ पर आप प्रॉपर्टी इजीली मिल जाती है फॉर रेंटेड. और रही बात इन टर्म्स ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स, आई थिंक पार्ट टाइम जॉब्स इज it's easy or it's not easy, that depends on you, honestly. So lot of people get their job in 1 month, lot of people get their job in 2 months, but there are jobs in the market. You just have to be very पेशेंट, सर्च करते रहो एंड अपना रिज्यूमे एंड अपना स्किल्स बढ़ाओ. ठीक है. आई सी पीपल विद डिफरेंट कल्चर्स जो कि एक ही कल्चर में स्टिक करते हैं. आई डोंट रिकमेंड दैट. आप एक कंट्री में आए वहां जहां पर आपको बहुत डाइवर्सिटी मिलेगी. सो बी ओपन टू दैट. बी ओपन टू एनी पार्ट टाइम जॉब इन योर स्टूडेंट करियर एंड आपको मिल जाएगा. इट्स नॉट वेरी हार्ड, ऑनेस्टली. सो इट्स अ मिथ दैट पीपल Rajesh, I think there's a network glitch. Okay. Can you hear me now? I think network chala gaya. You're freezed actually. Okay. Better now? आप देख पा रहे हो मेरे को? Hello. Hello. Yeah. Just give me 1 minute. Let me just check the another network. Huh? Okay.
Yeah, hi. So part-time jobs may, it is like that jobs are there in the market. It's just that you need to have that talent and you have to have the relevance with the market so that आप अपना job grab कर सकें. हाँ, सो पार्ट टाइम जॉब का यहाँ पर ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव. You cannot expect कि आप आओगे और आपको जॉब लग जाएगा. That's not gonna happen here because the country is different, the work style is different. They expect a different kind of people here. Or when I say different kind of, in India there's no part-time culture, right? In Canada there is a part-time culture and they kind of feel that we are giving you a kind of a professional job. So Okay. आप अप्लाई करते रहो, आप यहाँ पे आओ, अपना रिज्यूमे ठीक करो, अपने स्किल्स बढ़ाओ and be open to everything. I just don't want people to stick to one culture और एक ही community में रहो. Because you're coming to the country, you have to be very open. आप लोग को सबसे बात करना पड़ेगा. Be positive, be humble and be kind. बहुत jobs है market में and you will get one. किसी को जल्दी लग जाता है, किसी को 1 महीने बाद लगता है, but everybody will get a job for sure. But market में jobs available है, market में job available है. Market में job available. So after joining the, I think you have gone for the wireless communication post-grad program in Conestoga, right? So कितना relevant और कितना important तुम्हें लगता है कि जो आपका previous education है या profile है, उसी से aligned program में आना is important. So मेरे हिसाब से I think that is very relevant. अगर आपके पास कोई ऐसा experience है which is kind of useful for Canada or in IT. So basically I am from this telecommunication IT cloud background, and doing the similar kind of courses basically helped me to land a better job in Canada because Exactly. An experienced person, I can relate, I can tell them that I have already worked for like multinational companies and that experience will add to my further education and give me a better job. So it's very important, agar aapke paas purana experience hai from the IT background or from your particular field, my recommendation is to go for the similar kind of course. Agar aapko kuch padhai bhi karna hai, उसी कोर्स पे जाओ ताकि when you represent yourself to an interview, आपका पुराना background experience plus new studies can relate and give you a better opportunity. So that is very important. Very important. क्योंकि अभी lately it was in the news that 700 students were supposed to be deported from Canada just because of 2 reasons. First is the documents were not correct, and second is that उनके जो programs थे, they were not related to the profile. So end में जाके उनका एक experience ये हुआ कि we do not have job and we've gone wrong. तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद काउंसलर का या आपके जो कंसल्टेंट है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू गाइड यू फ्रॉम द I think I lost you. Yeah. Now you are audible. I'm saying that, yeah, it was a call. So it is very important for the counselor to write a profile directly. So just for the sake of sending someone to Canada, things should not be suggested so that वो student को वहाँ पे जाके थोड़ा सा ही bear करना पड़े या थोड़ा सा उसको एक rough patch मिले जहाँ पे उसको वो चीजें ना मिल पाए जो वो सोच के dream करके यहाँ से गया था. तो that is, I believe, is very important to stick to your profile. So मैंने भी वो न्यूज़ सुना है, they are deporting 700 students. So मेरे हिसाब से I think it's very very important how you choose your consultant. कोई ऐसा कंसल्टेंट मत चूज करे who is giving you just random advice. I've seen lot of people here in Canada जो कि मतलब कुछ भी random course लेके आए and they are not getting anywhere. डिग्री आप कर लोगे, you will not get a good outcome from that particular degree, honestly. So it's very important to choose your consultant. बात करो उनसे,
आपने क्या किया है, आप क्या करना चाहते हो, व्हाट आर योर इंटरेस्ट, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट फील्ड्स हियर इन कनाडा। सो आप अपना कोर्स बहुत प्रिसाइजली चूज करो एंड मेक श्योर आप कोई एक लेजिटिमेट और एक अच्छा कंसल्टेंट ढूंढो हु कैन सजेस्ट यू वाइजली। ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो एक डिसीजन है जहां पर आपको प्लानिंग करना है, उसके बाद अगर वो हो गया उसके बाद यू कैन नॉट चेंज इट बिकॉज आपने And पैसे I भर believe ये एक ऐसा चेंज होता है जिसमें your decision cannot be the final decision. Your decision is made out of the contribution of multiple people. एग्जैक्टली। सो आपको बहुत एडवाइस लेना है, बहुत अच्छे लोगों से एडवाइस लो, जिसने काम किया है मार्केट में उससे एडवाइस लो, एक्सपीरियंस लोगों से लो एंड चेक देयर वर्क। उन्होंने बहुत Correct. लोगों को भेजा होगा, सो check their work and check their reviews as well. So Exactly. that's very important. So now let's talk about the most common yet very questionable space in North America and South America continent, and that is racism. So बहुत सारे queries होते हैं कि racism बहुत ज़्यादा है, they do not accept Indians or they do not accept the Asian people. Have you had any experience like that? And if yes, how you dealt with it? So अभी तक तो नहीं हुआ है honestly, but ऐसा नहीं है, I will not say कि नहीं होता है. So you will get people in every community. I think यहाँ भी होता है, lot of people have experienced it, but I think the majority of people will appreciate your work और बहुत ही humble हो गए हैं. Okay. I can talk about Canada. मैंने यहाँ पे बहुत लोग देखे हैं and they are very humble, they are very supportive as well, especially different culture के बहुत supportive हैं. But you will get a few cases आप एक्सपीरियंस करते हो, बट यू हैव टू स्टे पॉजिटिव एंड ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग सुनते नहीं हैं, दे विल सपोर्ट यू। इनफैक्ट यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू विल सी सच केसेस। और माय ओनली एडवाइस यू टू बी हम्बल, बी पॉजिटिव, और ऐसे लोगों से जस्ट अवॉइड देम ऑनेस्टली। और बट यू विल So गेट, basically, it is like India only. You will yeah, have it's all just kind like of India. people. It's It just, is you who has to choose who to be with. yeah, it I is think that just is important. कि आपको पॉजिटिव रहना है, ऐसे लोगों के साथ नहीं अवॉइड करना है, एंड यू विल गेट टू नो कि कौन कैसा है। बट मेजॉरिटी ऑफ लोग आर वेरी वेलकमिंग, और स्पेशली इंडियंस की बहुत डिमांड है ऑनेस्टली। ठीक है, Indian की बहुत demand है. हाँ इंडियंस, सो दे लाइक हायरिंग इंडियंस बिकॉज वी आर, they will get a good engineers, they will get a good hardworking people, हम लोग savings They के have लिए, labor, they have generosity, they have humbleness. So they get everything what they look for during their. So मुझे लगता है Indians के बाद बहुत opportunities होती हैं when they actually get into a market like this. So exactly. जो proper government culture है वो कैसा लगता है आपको? Is it supporting to the civilians, or they have some different aspect of dealing with the nationals and internationals? So my experience with government, so I have done my like 2-3 so I've gone with this license part of mine, so काफी organized है, and यहाँ पर there is no such differences between you are international, you are a temporary resident or permanent resident. बहुत ही एक organized kind of process है which you need to follow, and if you're following the process, I think कुछ भी नहीं होगा, it's just that your formality काफी streamlined है process यहाँ पे when you are dealing with the government people, so आप उसको follow करो, nobody will question you, Okay. but ये है कि यहाँ पर वो नहीं चलता है, that जान पहचान type नहीं चलता है, so you just have to follow the process, that's it. उसके तो अलावा वहां कोई, पे मुझे लगता है कि इंडियंस को थोड़ा एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता होगा, है ना, बिकॉज वी आर वेरी हाँ मच इन द हैबिट ऑफ अच्छा जान पहचान है तो चलो हो जाएगा, बट हाँ दैट इज आई थिंक दैट माइट बी अ चैलेंज फॉर सम टाइम अंटिल यू गेट ट्यून टू इट. हाँ, बट आई हैव सीन लॉट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सो आपको फेसेस फेमिलियर मिलेंगे, बहुत मिक्स कल्चर है, बट एवरीबॉडी फॉलो द प्रोसेस यार यहाँ पे, सो देयर इज नो सच थिंग लाइक जुगाड़ और वो जान पहचान नहीं है, so आप फॉलो करो, एंड आई थिंक यहाँ पर काफी स्ट्रीमलाइंड है, आपको ज्यादा डिले नहीं होते चीजों में। सो राजेश, जो पार्ट टाइम जॉब बच्चे करते हैं, हाउ मच ऑन एन एवरेज दे आर एबल टू अर्न? मिनिमम वेजेस, सो इन ओंटारियो इट इज 15.50, $15 कुछ है, एंड आप 20 घंटा लगा के चलो, सो एटलीस्ट यू विल गेट अ गुड पॉकेट मनी टू सर्वाइव योरसेल्फ ऑनेस्टली। अच्छा, सो जीआईसी यूज करने का बहुत ज्यादा स्पेस नहीं आता है, ओनली द गवर्नमेंट रेगुलेशन आस्क्स यू टू यूज द जीआईसी. हाँ, सो अगर आप 20 घंटे भी जॉब कर रहे हो इन अ वीक,
तो आपका GIC काइंड ऑफ सेव होता है, यू विल गेट ऑल योर एक्सपेंसेस जस्ट फ्रॉम द जॉब इटसेल्फ। Just तो from. उसमें हालांकि अब आप तो ये 20 आवर्स का जो लिफ्ट है वो खत्म हो चुका है, एंड नाउ द स्टूडेंट कैन वर्क as much as they can, as much as they want. तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा एक पॉकेट फ्रेंडली हो जाएगा स्टूडेंट के लिए अगर उनका कोर्स प्रोग्राम हाइब्रिड मोड पे है तो। हाँ, सो आई थिंक इस ईयर एंड तक तो पीपल आर वर्किंग मोर देन 20 आवर्स। बहुत लोग 40 घंटा भी कर रहे हैं, 30 भी कर रहे हैं। आई थिंक एंड ऑफ दिस ईयर द गवर्नमेंट विल चेंज द रूल्स, जहां तक मुझे मतलब सुनने में आया है। अभी तक तो ऐसा सच कोई न्यूज नहीं आई है, बट पीपल आर डूइंग मोर देन 20 आवर्स। तो आप कर सकते हो, अभी तो कोई नहीं रोक रहा। Okay, so how food there? Could you actually struggle to adjust with the food, because Indian food is so lavish and so detailed, and anywhere in the world you won't get the kind of food that you get in India. So did you struggle? How do you come up with it? So honestly, yeah, I struggled honestly. Or the Indian food is really delicious, that's for sure. और उसको कोई replace नहीं कर सकता, that's also for sure. बट यहाँ पर है इंडियन रेस्टोरेंट, बट आपको फील नहीं आएगा फॉर कपल ऑफ मंथ्स। मुझे भी नहीं आया ऑनेस्टली, आई डोंट वांट टू गिव द रॉन्ग एक्सपेक्टेशन हियर। बट जब आप कमाने लग जाओगे तो यू विल ट्राई डिफरेंट कल्चर फूड, और आपको फिर एक अलग कैनेडियन और दूसरा फ्लेवर भी Everything comes आएगा। with time. Everything comes with time. सो आपका वो Okay. टेस्ट बन जाएगा दूसरा। तो दैट्स फॉर श्योर। So जो तुम्हारा कोर्स है, जो तुमने कोर्स दिया है, that is again the IT. You have done your BTech from India. क्या major difference तुम्हें लगता है, which however you were here doing a graduation which was a full length program, और अब तुम post grad diploma के लिए गए हो within the same sector which is IT, but major change in education pattern तुमको क्या महसूस हुआ? सो आई थिंक द मेजर चेंजेस कि यहाँ पर आपको बहुत एक आपको यहाँ का जो करिकुलम है वो थोड़ा डिफरेंट लगेगा। सो यू विल गेट वीकली असाइनमेंट्स। आपको जो एक 2 चैप्टर पढ़ा देंगे उसके बाद एक असाइनमेंट आ जाएगा, सो उस पर आपको रेटिंग में मिलेगी एंड दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर योर फाइनल ग्रेड्स। सो आप Okay. skip नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि आप 6 महीने पढ़ो ही नहीं और लास्ट में एक एग्जाम देके क्लियर कर लो। यहाँ पर आपको डिफरेंट Unlike प्रोजेक्ट, India. यू विल बी एंगेज्ड इन द प्रोसेस। सो आपको हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है, सो यू विल गेट अलोंग विद दैट। बट आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप उसी तरह पढ़ते भी रहते हो। सो आई एम काइंड ऑफ वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट, फिर एक ग्रुप प्रोजेक्ट करना है, देन आई विल हैव टू डू वन प्रेजेंटेशन ऑल्सो। सो आप एंगेज रहते हो इन अ प्रोसेस, और आपको वो लास्ट में सारा एक साथ नहीं पढ़ना है। सो वो एक डिफरेंट, आई थिंक यहाँ पर करिकुलम थोड़ा डिफरेंट है इंडिया से। Okay. So which one you enjoy the most? I actually One enjoy night this study? one हाँ, because एक रात पढ़ा, नेक्स्ट डे पेपर दिया एंड ऑल सॉर्टेड। हाँ, अगर आपको लाइक जस्ट एंजॉय करना है तो आई थिंक इंडिया वाला अच्छा है कि आपने पूरे 6 महीने कुछ नहीं पढ़े, ठीक है, लास्ट में एक दिन बड़ा पढ़ लिया। बड़ा कमर्शियली एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से अगर आगे मूव करना है तो आई थिंक दिस वन इज मच बेटर, जहाँ पे यू आर गेटिंग अलोंग विद द प्रोग्राम वेरी वेल। हाँ, यहाँ पर ये है कि एटलीस्ट आपने जो यहाँ पर जो करिकुलम है इसमें होता है कि आप एक्चुअली में लर्न कर जाते हैं, बिकॉज आपको एक असाइनमेंट करना होता है, तो यू विल गेट अ सर्टेन सिलेबस जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो आपको ना वो स्टिक रहता है। सो आप काइंड ऑफ यू विल गेट मेच्योर टू द सब्जेक्ट, और जैसे जैसे आप पढ़ते रहते हो थोड़ा थोड़ा याद रखता है क्योंकि आप प्रोजेक्ट कर रहे हो उसके साथ। तो आई थिंक ये भी इंटरेस्टिंग है, एंड यहाँ पर आपको सीखने को बहुत जल्दी मिल जाएगा, बिकॉज आपको बहुत सारी चीजें खुद करनी है। यू हैव टू रिसर्च, यू हैव टू डू द प्रेजेंटेशन, तो आपके डिफरेंट स्किल्स जो है ना वो भी बिल्ड हो जाती हैं साथ साथ। प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी पीपीटी स्किल्स और ये सब, तो बड़ा सारा डिफरेंट है यहाँ पे, एंड आई थिंक आई एम लाइकिंग इट ऑनेस्टली। दैट्स मजा आ ग्रेट। रहा है। So, Rajesh, one piece of advice you would like to give the coming students? सो न्यू कमर्स को आई वुड सजेस्ट कि यार मेक श्योर कि आपने अपना कोर्स सही चूज करा है, एंड टेक प्रॉपर एडवाइस फ्रॉम द लेजेंड पीपल जिन्होंने काम किया है मार्केट में एंड जिन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स भेजे हैं। आप इतना पैसा लगा रहे हो, यू हैव एवरी राइट टू चूज योर True. कंसल्टेंट। उनसे रिव्यूज लो, उनसे उनका चेक करो बैकग्राउंड, उनका कैसे कैसे उन्होंने कौन कौन से स्टूडेंट्स उन्होंने भेजे एंड व्हाट दे आर डूइंग। बहुत रिटन कंटेंट है, एंड मेक श्योर कि आप अपना जो सब्जेक्ट है, अपना जो स्टडीज है वो बहुत प्रिसाइसली, बहुत अपने हिसाब से चूज करो, बिकॉज वो डिसीजन ही आपका फ्यूचर मैटर करेगा। और मेक श्योर दैट यू हैव good financial with you while coming to in Canada also. That is very important, and I just wish everybody all the best. और
और आई थिंक इतना कुछ स्कैरी नहीं है, इट्स जस्ट दैट इट्स द फर्स्ट स्टेप व्हिच इज काइंड ऑफ स्कैरी, बट उसके बाद यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत डिफरेंट कल्चर में मिलेंगे, बहुत हम्बल लोग मिलेंगे, एंड यू विल गेट लॉट ऑफ डिफरेंट वाइब एज वेल. सो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है, आई एम काइंड ऑफ एंजॉयिंग इट. और अगर आप पढ़ना चाहते हो और इफ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, डू इट यार. इट्स रियली एन इंटरेस्टिंग जर्नी फॉर मी एज वेल. Great. So thank you so much, Rajesh, for taking your time out, because I understand taking time out in two different zones of the globe is actually difficult. But thank you so very much for taking. एनी टाइम सुमंगी, थैंक यू सो मच. बहुत हेल्प किया आपने, सो रियली अप्रिशिएट दैट. स्मार्ट स्टेप्स. Yeah. So thank you so much. Smart Step always would want to wish you all the luck. May you have a good life, employment, as well as future in Canada. Thank you so much, Rajesh. थैंक यू, बाय बाय. Bye.